Good evening, everyone, and welcome to Unique Digital Academy. My name is Shivabrata Nayak, and I'm your spoken English coach. So, as far as if you talk about Unique Digital Academy, it is a well-known, renowned institution or institute in Bhubaneswar that specifically focus on spoken English class for the all medium students. It generally focus in communication, fluency and pronunciation development, as well as good uses of the grammar. तो जदि आम कहिबा यूनिक डिजिटल एकेडमी भुवनेश्वर गोटे रेनाउंड इंस्टीट्यूशन अटे एंड ये particularly provide करछन्ते स्पोकन इंग्लिश क्लास कम्युनिकेशन फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट कोर्सेस सो ये जो कोर्सटा सबु वर्गर पिलांको पाई अटे सो डेफिनेटली ये कोर्सटा बहुत मात्रा हेल्प करिवो एटी इंग्लिश केवल इंग्लिश रे यूसेज नुह ता मझिरे मझिरे पिलांकर बुझिबा पई तांको ओडिया रे मध्य सहाय्य करा जिवो सो जो भली भाव रे समस्ते मीन्स स्पोकन इंग्लिश रे यूसेज ता केमति करि परिबे सो तारि ऊपर मध्य मीन्स फोकस ता रखा जिवो सो लेट्स बिगिन द कोर्स इफ आई टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सो स्पोकन इंग्लिश रा आउटे भाग जोटा को आम कह सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सो जिते आम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट बा स्पोकन इंग्लिश विषय कहूँ पिलांको माइंड रे गोटे डर आसी होची जे हमको इंग्लिश टू इंग्लिश कहबार अच्छे बट रिमेंबर दैट ये जो जिनसटा मीन्स प्रत्येक जगार दरकार हुए वेदर यू गो फॉर मीन्स फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द कॉलेज वेर यू हैव टेकन एडमिशन मनकर कौटी कौ कॉलेज रे गोटे तुम फर्स्ट टाइम पे एडमिशन होची और यू आर यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड यू वांट फॉर अ जॉब बा तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सच एवं तुमको कौन दरकार पड़े चाकरी पाई तुम मीन्स कौन सी कंपनी को जाऊँ सो वेर एवर यू गो व्हाट यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स isn't it? And it all begins with what? It all begins with means how you speak in English, right? Somebody asks you like, tell me something about yourself. कई जने जदि पचारुछि तम विषय किछि कह किंतु केमति कहबो इंग्लिश रे कहबो कारण से पचारुछि तुमको इंग्लिश रे so if he asks you in English then your answer or your reply must be in English, isn't it? किंतु सेतिक जिनस भी मीन्स किछि आमे आम मन रे डर थाए बा आमे जेहेतु ओडिया मीडियम रे पिला हिथाउ तो आमको मीन्स इंग्लिश ता सेते फ्लुएंटली बा प्रॉपर सेंटेंस रे आमे कहि पारुनु जोटा होची कोन मीन्स जोति पई आमे बहुत जगह रे कोन फेलियर हे जाउछो बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट right so with us you will definitely improve your English section as well as the fluency level fine now let me tell you when you go for the soft skill development or spoken English what are the portion you need to cover कौन जिनस गुड़ाक तुम ये spoken English माध्यम रे शिखा को पाइब so the first thing is called as in spoken English we will follow certain things. The first thing is called as how you communicate and what are the things you need to communicate. को जिनस गुड़ाक कम्युनिकेशन करिवो एवं मीन्स कौन कौन कम्युनिकेशन रे दरकार अटे जोटा कि तुमको करिवार दरकार सो सेकंड इज कॉल्ड एज मीन्स हाउ यू बिल्ड योर फ्लुएंसी लेवल को भली भाव रे तुमर फ्लुएंसी लेवल टा को तमे डेवलप करिवो सो एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज not only communication and fluency but also pronunciation because that's the big factor right जोटा कि बहुत बड़ा factor अटे because if you talk about that means any of the word improperly or means not in a proper pronunciation so the other person unable to understand it
फाइन सो अन्य जन लोक से जो मीन्स शब्दटा तुम कह सो अन्य जन लोक से शब्दटा को न बुझीपारे कारण तुम प्रोनाउंसिएशन से भूल भाव में बुझीपारे राइट सो फाइनली let me tell you the first thing is called as means we'll talk about the communication first. So what do you think that what do you mean by communication कहले कौन बुझा जाए? So communication is nothing but the exchanging information between two of the persons or two individuals, right? It may be referred to two individuals or it may refers to means two groups, राइट हो पारे कम्युनिकेशन टा कौन ना दीटा इंडिविजुअल भितर हो पारे बा दीटा ग्रुप भितर हो पारे बुझी सो दैट इज व्हाट नोन एज द कम्युनिकेशन ओके okay I'll just tell you certain things here. Now let's see that. Look into this. So this part is referring to you and this refer to another individual and you both make a communication. So तुम दी जन को भितर एठी तमे अच्छा एवं एठी आउ जने अछंती एवं तुम दी जन को भितर कम्युनिकेशन होची. So communication medium टा कोन ना the medium of communication is called as either speaking, right, or you talk about writing, speaking or writing. So this is nothing but known as a channel. So एठी तमे अच्छा एठी आउ जन अछते एवं तुम दी जन के भितर कोन होची कम्युनिकेशन ना माध्यमटा कोन ना either writing or speaking, isn't it? So and this writing and speaking is known as channel or called as a code. So but please do remember that if the communication between you two get considered success, याको हमें सक्सेस सेते बेले कहिबा जिते बेले कोन होबो ना तमे जहा कहउचो से जिंसटा अन्य जने भल से बुझी परथुओ. So then only we consider that your communication gets a success. तमरा कथावार्ताटा सक्सेसफुल हैला बोली कि किंतु तमे जहा कहूच जने जदि न बुझी पारुची ताले आमे कोन ताको सक्सेसफुली कहबा नो ताले एठी कोन होची एठी बैरियर्स आसी होची. सो एठी कोन आसी होची बैरियर्स रो माने होची प्रतिबंधक. सो केमती प्रतिबंधक होची ना यू कैन से दैट लेट्स से when you are speaking something, if you speak so slowly or called as speak so fluently, or you can say speak means in a very advanced manner, or you speak means which is unable to heard, जोटा कि जने सुनी भी पार नथिबो. So in that case आउ जने बुझी पारलानी जे से कोन कहूची बा को लैंग्वेज टा यूज करूची. So सेति पई आमे जेतले कम्युनिकेशन करिबा सो आर कम्युनिकेशन मस्ट बी व्हाट प्रॉपर, राइट. आर कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रॉपर. हाउ इट शुड बी प्रॉपर ना इट शुड बी लाउडर हवा दरकार, सिंपल हवा दरकार, राइट, एंड टू द पॉइंट हवा दरकार बा डायरेक्ट हवा दरकार, राइट. देन ओनली द अदर पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग. तमे कौन कहिया को चाहूच सो से जिनसटा अन्य जने बुझी पारिबो. ठीक अछि. सो सेटा को कम्युनिकेशन कुआ जाय एवं स्पोकन इंग्लिश रे सो कम्युनिकेशन इंपोर्टेंस ता बहुत अटे. व्हाई ना बिकॉज what we are saying spoken English, it means you need to speak. So you need to speak that the other person understand.
Isn't it? If the other person doesn't understand, then it is known as a communication barriers. Fine. Now, let me talk about the next one. Yeah. The next one is about the what are the things you need to use in your means communication part. The first thing is called as your personal information. Your personal information. तमर जन पिला निज विषय जमीती बहुत भल से जानी दरकार. Right, personal information, which is very important. Why personal information is very important? Personal information ta kahi ki jaruri ate na, because everyone and every places pratyekti jaga re ebong pratyekti loko means ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ତୁମ ସହିତ ମିଟ୍ କରେ, ସୋ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ. ସେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବା ତୁମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଶ, ସୋ ୟୁ ଅଲସୋ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ନେମ୍, the person's belonging, the person's qualification, and the person belongs to which of the job, isn't it? So ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା means personal information ଟା ବହୁତ important ଅଟେ. So ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ means about a person's bio, right, ବା biodata, isn't it? So a personal information ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର? So first is means your name. Well, let me point out, if I talk about that, before name, let's say that you meet a person, you meet a person in a restaurant, right, first time, and that person starts with what? The person starts with greetings, isn't it? The person starts with what? Greetings. से पिलाटा तुम्हारे तो first जितने देखा ला, से कौन करीबो? First तुमको greetings दबो. So what do you mean by greetings? ने greetings रे माने होची जने जनो को means some किसी कहिबा पूर्वरु ताकु से को हिसाब रे approach करीबो. Let's say that means when I start the session, जितने मु session टा start करी, what did I say? मु कौन कहली? Good evening everyone, isn't it? So maybe that person tells you the same, like the timing ta seibali evening heitwa, good evening, isn't it? That could be your greetings. You can also say somebody according to the time, good morning, right? So, or you can also say good afternoon, ba, hello, right? So that's what is the kind of a greetings also you can use. Or if you find out a person who is a stranger to you, गोटे लोक जोटा को जहाँ को तुम टोटली जानी न कि देखी न भी, सो एवं ता सहित तुम रेस्टोरेंट रे देखाउछ बा रेलवे स्टेशन रे देखाउछ, सो बा से लोकटा फर्स्ट टाइम तुमको डाकुची, सो से को हिसाब रे तुमको डाकिबो, एक्सक्यूज मी, isn't it? So that's the kind of approach somebody can call, right? So greetings could be known as a good evening, good morning, good afternoon, hello, excuse me. These are the kind of words we generally use when we approach somebody. जेतेबेले आमे काहको approach करछु. Second, the second one is called as your name. Name. So तमे तमरो नाटाकू means जणुकू जणाउछ बा जणुकू तमे जदि पचारिबो ता ना जानिया पई से तुमको कोन कहबो. So you can start with what? My name is so and so, or you can also say I am so and so. So you have also another option that you can say myself so and so. Understood? So
ये तीनटा हिसाब रे जे कोनसी गोटे तुम यूज करि परिबो बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट व्हाट यू ऑलवेज गो विथ दिस आई एम like you can say I am Shivabrata Nayak. So similar to that you also take your name in that manner. So you can say that good evening, I am Shivabrata Nayak, right? So then after what? After name, greetings, name, then you can go with the what? You can go with the means who you are actually, or you can say what you are. Who you are or what you are. So तमे कौन करछो, right? So बा तमे कहि परिया तमर प्रोफेशन कौन, right? Let's say that means if I am saying good evening, my name is Shivabrata Nayak or I am Shivabrata Nayak and I am a teacher, isn't it? सेही हिसाब रे तमे मध्य जणु जे संबोधन करछो सो तमे मध्य तमर नाटा को कहबो एवं तमे कौन करछो सेही जिंसरा यूज करिवो. After that you can also go with the what means if you want to tell your educational qualification तमे तमरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टा भी कहि परिबो एवं तमरा एक्सपीरियंस जहाँ भी अछि जो जगह रे भी चाकरी करछ से विषय मध्य कहि परिबो एंड ता सहित तमरा हॉबीज एंड इंटरेस्ट को मध्य यूज करि परिबो. ठीक अछि. सो these are the couple of things that you must know and you must use them. So and if you have any aim or object that also you use it. So जेमती मु कहली को हिसाब रे निजु को संबोधन करिवो व्हाट यू आर अ यू कैन से दैट व्हाट आई एम अ टेक्निकल पर्सन और कॉल्ड एज आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. मु जने सॉफ्टवेयर डेवलपर अटे बा मु जने इंग्लिश टीचर अटे बा मु जने मीन्स बैंक ऑफिसर अटे बा मु जने फ्रेशर अटे, राइट? सो करेंटली आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, राइट? से हिसाब रे मध्य तमे मीन्स यूज करि परिबो. एंड थर्ड जिनस होची योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो जेतेबे आमे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर रेफर करछु सो आमर मीन्स को जाय मु पाठ पढिछि. सो लेट्स से दैट यू कैन से दैट आई एम एन एमफिल होल्डर और आई एम एन एमबीए, राइट? आई एम एन एमफिल होल्डर और आई एम एन एमबीए. सो बा आई एम अ प्लेन ग्रेजुएट, मु जने मीन्स ग्रेजुएट अटे, सिंपल. So you can also say that which year you did your graduation, को year रे तमे तमारा graduation complete करछ सेटा मध्ये तमे यूज करि परिबो. सो ता व्यतीत तमे तमारा एक्सपीरियंस जदि कोठी आगुरु चाकरी करछ सो सेटा मध्ये तमे कहि परिबो. लाइक तमे एभली हिसाब रे कहि परिबो जे जदि वर्तमान तमे चाकरी करछ ता विषय मध्ये कहि परिबो बा पूर्व जदि कोठी चाकरी करथबो करूथिलो ता विषय मध्ये कहि परिबो. जेमती कि मीन्स मुझे कहबी आई वाज वर्किंग एज अ मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपर इन IBM Dux, right? I was working as a software developer at IBM Dux in Kolkata, right? In the year of 2006 to 2008. So सेटा को हमें यूज करि परि हमर एक्सपीरियंस हिसाब रे. सो बा तापरे आमे आउ कोठी चाकरी करछु से विषय मध्ये आमे यूज करि परिबा. सो एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट जोटा निजर हॉबीज आउ निजर इंटरेस्ट इफ यू आर मीन्स इफ यू लव टू रीड बुक्स जदि तमे बही पढ़िया भल पाउछ, इफ यू लव टू यू नो प्ले चेस और if you love to play means any outdoor games or indoor games, that also you take it as the name. So outdoor और indoor games कहले कहाँ को बुझा जाए. Outdoors means जमती हमें कही परिया cricket, football, volleyball. So these are called as outdoor games. ए गेम गुड़ा को हमें outdoor बोली को. But indoors are like I told you chess, right? So table tennis. So ए गुड़ा को हमें कौन मीन्स इंडोर गेम हिसाब से नहीं परिबा. सो
हॉबीज एंड इंटरेस्ट केवल गेम न थाए आहरी भी बहुत जिनस थाए लाइक यू कैन से दैट सिंगिंग और डांसिंग और यू टॉक अबाउट मीन्स अदर एक्टिविटीज लाइक ट्रैवलिंग मीन्स कौन सी अजଣା जगह को जीवा बा मीन्स ट्रैवलिंग करवा यहाँ हॉबीज एंड इंटरेस्ट आम यूज कर एम एंड ऑब्जेक्टिव सो तमें तुम लाइफ रे कौन गोल रखीच कह राइट सो व्हाट यू वांट टू बी you want to be a doctor or you want to be a means engineer or you want to be an IAS officer or you want to be a bank officer right so सेटा को सही हिसाब रे तमे यूज कर परियो सो बिसाइड दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन आहरी मते बहुत गुडे जिंस अछि जोटा को आमे जानिबा दरकार जेमति कि लेट्स से दैट जेतले आमे means soft skill development kotha kohuchu so in that case means some questions can come like tell me something about your place so why your place is so beautiful why your place is so famous and means which place you belong to how and what are the language your place people speak right what are the language your place people speak तम जगार लोक मानकर लैंग्वेज कौन अटे सो तुम जगार लोक मानकर प्रोफेशन कौन अटे तुम जगार लोक मानकर मीन्स फेस्टिवल कौन अटे सो या विषय भी गोटे लोक मीन्स इंग्लिश रे कहि पार्थवा दरकार लेट्स से दैट मीन्स पीपल हु लिव इन सर्टेन पार्ट ऑफ means Odisha like let's say that Sambalpur why Sambalpur is famous right so and what are the festivals that held in Sambalpur so and also what kind of a language means that the Baripada people used to speak right so and what kind of a culture they have तांकर को बोली भाबरे कल्चर अटे तांकर मीन्स प्रोफेशन कौन अटे सो you may find out these are the questions so ए क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर मध्य तम पाखे रहिबा दरकार एवं ताकू तमे को बोली भाबरे इंग्लिश रे कहि पारथुबो ठीक अछि सो इन दैट केस फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर पर्सनल इंट्रोडक्शन beside personal or beside your introduction you also know about the second thing it's called as a how you if somebody asks you about your family तम फैमिली विषय पचारा सो सेठी तमे कौन कहबो लेट्स से दैट मीन्स कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली कैन यू tell me something about your family right can you tell me something about your family so तम परिवार विषय किछि कहबो कि about your family so in that case what would you say तमे कौन कहबो so obviously you can start with what means you can start with that means I belong to a joint family I belong to a joint family or I belong to a nucleus family joint family और nucleus family कहले कौन बुझा जाए ना joint family जोटी की means बापा माँ भाई भौणी means एवं दादा खुड़ी so everyone is present let's say that father mother uncle aunt grandfather grandmother then after means you can say grandchildren isn't it so everyone is living in the same place is known as a means joint family ताकू को जाए जोठी means जेजापा जेजमा father mother and तांकर grandchildren एमाने समस्ते दादा खुड़ी समस्ते थांती मिसिकी रुहंती सो सेटा को joint family बोली कुआ जाए so but nucleus family is referring to the means father mother and their children
सो बापा माँ एवं तांकर छुआ सो से मानू नहीं न्यूक्लियस फैमिली कह जाए सो जिते तुमको क्वेश्चन पचार जाए जे कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली इफ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली देन say that what I belong to a joint family and in my family consist of 8 members or 9 members. My grandfather, my grandmother. My grandfather was a retired police officer. My grandmother was a housewife, right? And at present she is not doing that. So she is bedridden, right? Second is called as my father. My father is a school teacher and my mother is a housewife. And I have 3 siblings or 2 siblings. Siblings रा माने होची कोन ना मोरो दी भाई किंबा दी भौणी अछंती. I have 2 siblings, so 1 brother and 1 sister, right? So including me. So in that case you are telling that means with that you can also add means in our family also my uncle, my aunt, right? And they don't have any children. So in that case you are just telling about the joint family. So grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, and we are the 3 siblings. Got my point? So in that case if you are telling about your family, you also say that what means your family is very nice and you love your family and each of the members in our family is not depend to the other and everyone is independent and everyone is respect to each other in a very well manner and everyone is means lovable, right? So in that case what you are doing तमे कौन एटी करियो चाहूछ ना तमे एटी प्रेजेंट करछ जे तमर फैमिली कौन अटे. यू ऑल्सो टेल दैट तमे तमे मध्ये आउरी ऐड कर परियो जे आवर फैमिली इज full of what orthodoxy, Brahmin or called as a pure God loving people, right or not? So से जिनस ऊपर मध्य तमे पॉइंट आउट कर परियो. सो एठी हमें दीटा जिनस शिखिले. फर्स्ट होची इंट्रोडक्शन, सेकंड होची मीन्स इफ समबडी टेल्स or ask about your family. Third जिनसटा होची जे who you are and what are the qualities you have, right? Who you are and what are the qualities you have, right or not? So जितेला मैं कहूची निजु को को भली भाबरे डिफाइन करिवो, right? So what kind of a qualities you have? तम भितरे कौन कौन qualities अछि? So से qualities गुडा को तुमको point out करियार अछि. जेमती if somebody asks me that who you are, so I can say that I'm a means self independent, optimistic, practical mindset, taste in God or believing in God, as well as means respect to every citizen, as well as means be a good human being. So that is what called as a kind of a quality you refer. So तमे तले निजु को डिफाइन करछो तमे किए न तमे जने ऑप्टिमिस्टिक पर्सन अटा. ऑप्टिमिस्टिक कहले कोन पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? जो माने सदा बेले पॉजिटिव साइड को देखंती. सो तांको आमे ऑप्टिमिस्टिक बोली कहू. सो आम एन ऑप्टिमिस्टिक, self oriented and independent. Self oriented means मु निजु को मीन्स बहुत मात्रा फोकस करे मो करियर को नहीं कि इंडिपेंडेंट अटे. सो एज वेल एज प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन्स एवं रियलिटी टा को मु बुझे चेष्टा करे. एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज आई रेस्पेक्ट टू एवरी सिटीजन, राइट? सो एज वेल एज आई कैन ऑल्सो से दैट व्हाट ऑलवेज वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. मोर सदा बेले गोटे गोल जे मु को बली भाबरे भलो लोक जने ही परिबे. So that is again called as a describing yourself, describing your quality or describing yourself. Describing yourself. So please do remember that these are very important things that one should know. जने जेमिथिले जानिया दरकार जे ई जिंस गुडा को मु निजु को जतले मीन्स कोठी इंट्रोड्यूस करछि ई जिंस गुडा को मु यूज करिबा दरकार. ठीक अच्छे. Beside this, describing yourself means we can also
गेट सम क्वेश्चन आमको आउरी मध्य किसी क्वेश्चन मिली पारे जेमती कि वी कैन से दैट how is your friend, how's your friend, how's your friend, tell about you, or we can say that how's your friend describe you. So this is again called as another question. Describe you. How's your friend describe you? We can also say that okay. We can also get that some questions. What do you what do you mean by honesty? What do you mean by honesty? And so let me point out जदि मु एठी तुमको किछि जिंस कहया चाहे मीन्स हाउ योर फ्रेंड डिस्क्राइब यू तुम सांग तुमको को हिसाब रे डिस्क्राइब करंती सो तमे पूर्वर जो जिंसटा मीन्स जहाँ जहाँ मु कहतली से गुडा को मध्ये यूज कर परियो सेकेंड रे व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी ऑनेस्टी कहले कौन बुझा जाए बा आमे आउरी मध्ये यूज कर परिया लॉयल्टी कहले कौन बुझा जाए राइट बा जदि तुम इंटरव्यू रे बसछ से तुमको आहुरी भी क्वेश्चन पचारि पारती तुमर मीन्स चाकरी संबंध रे राइट तुम जो चाकरी कर बा तुम जो चाकरी करने को जाऊच बा जो चाकरी पे मीन्स इंटरव्यू दबाक जाइछ से चाकरी विषय तुम कौन जानछ लाइक यू कैन ऑल्सो गेट द क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी what do you know about the company, right? So you also may get the question called as how do you handle how do you handle the pressure, how do you handle the pressure. तो एसबू जिनस गुड़ाक यू क्वेश्चन गुड़ाक तुम देखले यार जब तुम प्रिपरेशन कर सो फर्स्ट जिनसा हूँ कौन ना कौन सी लैंग्वेज को शिखा हेले प्रथमे कौन जो जो जिनस गुड़ाक इंपोर्टाट अटे से जिनस गुड़ाक आमको कौन करार अच्छी बुझीबार अच्छी मन रखार अच्छी राइट आम जानवा दरकार आमको कौ कौ क्वेश्चन पचरा जापे राइट सो एवं से क्वेश्चन गुड़ाक से क्वेश्चन गुड़ाकर जो आंसर गुड़ाक आमको कौन करार अच्छी मन रखार अच्छी एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी get same kind of a question, then we answer it on the same manner, isn't it? Like I said, how's your friend describe you? What do you mean by honesty or loyalty? What do you know about the company or our company? How do you handle the pressure? Or you may get the question called as how much salary do you expect? How much salary do you expect from us? So केते सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर आम पाखरु डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस सो जतिक क्वेश्चन गुड़ाक मुझे लिखुची सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर हाईली नेसेसरी इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ जॉब राइट सो you need to find out answers from it and please to remember that जते बेले आमे कोनोसी जिंस पई प्रिपरेशन करूछु सो हमको कौन करिया दरकार ना मीन्स सेठी की जीवा लेट्स से दैट कोनोसी इंटरव्यू तमे मीन्स इंटरव्यू पई अप्लाई करछ एवं इंटरव्यू पई तुमको डका जाइछि सो तमे ता पई प्रिपेयर हे की जीव ना एंड प्रिपेयर हेबा को हेले तुमको कौन करिया पड़ियो ना यू नीड टू नो the kind of a question that generally means interviewer ask right interview जो question गुड़ा को पचारती से question गुड़ा को आंसर पाई निज को प्रिपेयर करी जीवा पड़ो so at the same time you can't think
that what, that you don't know means how to speak, right, or means how you use the English language so that you answer the question. So तमे means सेठी तमे जाने परिबन जे तमे means English रे को भली ए question answer उडा को दबो, right. So for that you need to find out the answer, you need to go with those of the answer, and you need to means give the answer simultaneously, right. So that is what. Okay. Fine. Then the next thing is called as what? Once you have done everything, then the last one is called as means you must ask, like you must show your interest, that you hungry for that job, right. So जदि तुम से जॉब पाई जाउछ बा जॉब रे एति गुडे क्वेश्चन तुमको पचरे जाउछि, so you show that you are hungry for that job, and for that what you supposed to do, you supposed to ask that when do I receive the confirmation, right. So and if I get the confirmation, then where my posting will be held, right. So this is again called as a means feedback. We can say that feedback, and that feedback कहले कौन तमे तुम आड़ू ताकू दब फीडबैक जे कौन ना तमे जॉब प्रति बहुत इंटरेस्ट अच्छ एवं तमे चाहूचे तार मीन्स कन्फर्मेशन ता तमे केबे पाइबो. सो यू मस्ट आस्क इन द मैनर दैट व्हेन डू आई गेट द कन्फर्मेशन, मु केबे कन्फर्म हेबी बा मते को बळी मते केबे कन्फर्मेशन दिया जिवो, व्हेन डू आई गेट द कन्फर्मेशन, or you get the kind of a question called as a how was my interview. So you may ask how was my interview, so at the end of it, so tame taku pachari periyo, so how was my interview. So even means jadi darkar purche tame au jaha bhi tamo interest adu sei jinso pai madhya से गुड़ा को मध्य पचरी परिबो, but with the proper English language. And finally you can use the end note by saying thank you, thank you, thank you. So that is the ending point. So please do remember that कौनसी जिनस को शिखा आमको कौन तार कौन बिगिनिंग टाक जानिबा दरकार. बिगिनिंग टाक जानिया हेले आमको कौन करियार अच्छी ना फर्स्ट मीन्स आमको जो जिनस गुड़ाक मैंडेटोरी अटे से जिनस गुड़ाक लर्न करिया पड़ो, राइट. जमती कि निजर सेल्फ इंट्रोडक्शन, योर फैमिली, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अबाउट योर सराउंडिंग, अबाउट योर फ्रेंड्स, एंड अबाउट दीज आर द क्वेश्चंस. यही क्वेश्चन गुड़ा को मध्य तमे तम माइंड रखिबो, राइट. एंड सही हिसाब से निजको प्रिपेयर करिवो प्रत्येक दिन. मीन्स गोटे पिला जदि किछिटा मीन्स छोट छोट कॉमन जिनस उपरे मीन्स से लर्न करिवो. लेट्स से दैट मैं जदि तुमको कहूची, लेट्स से दैट द फर्स्ट थिंग इज व्हाट. In spoken English, like I said, communication is important. Second is called as a pronunciation, right. So pronunciation माने कौन ना को हिसाब रे तमे वर्ड टा को यूज करछो, राइट. को हिसाब रे तमे वर्ड टा को यूज करछो. लेट्स से दैट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट certain words, if I am giving you a difficult word called as a pneumonia, so how do you pronounce it? You never pronounce it like pneumonia or pneumonia, so you say that pneumonia. So say bali hisab re means if I am giving you another word that called as a acrimonious, so eta kon acrimonious, isn't it? So in that case what do we find out, means our pronunciation ta matter करे, isn't it? So pronunciation रे हमको कौन कौन जिनस देखियार अच्छी. So हमको देखियार अच्छी
जे कोबली भाव में वर्ड्स को आम प्रोड्यूस करूँ वर्ड्स साउंड वर्ड्स साउंडटा कोबली हिसाब से प्रोड्यूस होची सेकेंड मीन्स फ्रेज फ्रेज कोबली भाव में यूज करा जाउची एंड सेंटेंस को कोबली भाव में आम सेग्रीगेट करिकी सेंटेंस यूज में कोबली भाव में करूँ राइट. So in that case pronunciation also refers to like intonation right. What do we mean by intonation? So intonation is generally आमे speech को refer करिबा stress को refer करिबा higher pitch lower pitch ये सब जिनस गुड़ा but एगुड़ा को आमे means शेषाड़ को पढ़ा बट प्लीज टू रिमेम्बर दैट जिते आम बहुत गुड़ाए वर्ड यूज करूँ एवं से वर्ड गुड़ा को कोबली भाव में उच्चारण करा फ्रेजर उच्चारण केमती कौटी आमको पंचुएशन मार्क देखिबार अच्छे पंचुएशन मार्क कहले कौन फुल स्टॉप हो बा कमा हो बा एक्सक्लामेशन हो बा क्वेश्चन मार्क हो बा इन्वर्टेड कमा रो काम कौन एंड also you need to understand semicolon isn't it. So एवं dash रो usage कौन so यही सब जिनस गुड़ा जिते कौन सी सेंटेंस रे लगे सो आमको कौटी पॉज करिवार अच्छी पॉज कहले कौन साइलेंट टेम्पररी पॉज नबार अच्छी बा टेम्पररी ब्रेक नबार अच्छी कौटी आम मीन्स कंप्लीट ब्रेक नबार अच्छी बा सेंटेंस टाको एंड करियार अच्छी. सो से जिनस गुड़ा आम जाना दरकार कौटी आम क्वेश्चन कला बेले को हिसाब से सेंटेंस को कह दरकार एवं कौटी आम जो स्टेटमेंट कहते से समय आमर स्टेटमेंटा कौली हिसाब से हवा दरकार एवं जो आम एक्सक्लामेशन दूचे से कौली भाव में फिल करिया दरकार. ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी नो देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक वी से दैट डिक्लेरेटिव which is known as a adjective or declarative statement. Second one is called as a means imperative, and the third one is called as a interrogative, and the fourth one is called as a exclamatory. So in that case यार स्टेटमेंट कोबली हवा दरकार. लेट्स से दैट द सेम स्टेटमेंट यूजिंग विद द डिफरेंट एक्सप्रेशन विद द डिफरेंट टोन राइट. लेट्स से दैट आई मे डू दिस टास्क. मे आई डू दिस टास्क. आई मे डू दिस टास्क. मे आई डू दिस टास्क. सो व्हाट डू वी फाइंड आउट? वी फाइंड आउट 2 sentences, but the former sentence is declarative whereas the latter sentence is a question, isn't it? So से भली भाबे जिते आम कौन ऑर्डर दौचु कौन सजेशन दौचु कौन एडवाइस दौचु सो आमर टोनटा कौ भली हवा दरकार एवं आम कौ हिसाब से स्ट्रेस देकी कथाटी को कहवा जमती कि मीन्स आम कहूँ गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर राइट बा आम कहूँ सिट डाउन देयर or we say that what stand up, isn't it? Or we say that what find the 24 number page and find the word from the 24 number page, right? In that case what happened here means our tone ta kobali haba darkar in a different sentences. So जोटा कि कौन मीन सेंटेंस पढ़ला बेले सेंटेंस टू कहला बेले आम कौ वर्ड रे स्ट्रेस दबा कौ फ्रेज को कौ भली हिसाब रे आम कहवा एवं सेंटेंस टार मीन्स टाइप कौन हवा दरकार राइट. डिक्लेरेटिव हवा दरकार ना इम्पेरेटिव हवा दरकार ना इंटरोगेटिव हवा दरकार ना एक्सक्लेमेटरी हवा दरकार. जदि आम डिक्लेरेटिव कहूचे जोटा कि सिंपल स्टेटमेंट अटे जो जदि आम इम्पेरेटिव कहूचे ताले एटा रेफर करूँ कौन सजेशन एडवाइस ऑर्डर एगुड़ा को रेफर करूँ.
इंटरोगेटिव कहले आम बुझिले क्वेश्चन को रेफर कला राइट जदि आम एक्सक्लामेशन को रेफर करछे ताले एक्सक्लामेशन आम कौन ना सरप्राइज सरप्राइज और मीन्स एक्साइटेड एक्साइटेड बा आम कहि परिबा सैड सैडनेस और सरो so surprise excited sadness or sorrow right so or sudden anything which is suddenly felt anything you suddenly felt so you use the kind of a expression like you can say oh or we say that what alas or we say that hooray isn't it or we say that what egad or we can also say that bravo or we can also say omg oh my god right or we can also use the term called as a hey right so ये जो expression गुड़ाक यूज करा जाउची सो यूज कराए कि जो सेंटेंस गुड़ाक कहूँ से गुड़ाक आम कौन कहू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एवं जोटी आम इंटरोगेटिव सेंटेंस गुड़ाक कहूचे सो इंटरोगेटिव सेंटेंस आम केमती स्टेटमेंट गुड़ाक कहूँ जमती कि वी कैन से दैट इंटरोगेटिव स्टेटमेंट आम WH वर्ड यूज करिकी कहूचे राइट yes so इंटरोगेटिव स्टेटमेंट आम कौन करुचे WH वर्ड यूज करिए कहूचे राइट जमती कि आम यूज करुचे हु व्हाट which then after when where why so look into it so kete gude word ame use kale who what which when where why so ei word guda ko use kari madhe ame kon korche sentences guda ko frame korche ba sentences guda ko formation korche similar to that ame sentence auri madhe use korche jemti ki did do किंबा डज को लगे कि ठीक अच्छे या को लगे कि मध्य आम कौन सेंटेंस फॉर्मेशन करछे आम सेंटेंस फॉर्मेशन इज आम आर वाज आ वेर को लगे कि मध्य सेंटेंस फॉर्मेशन करूछे ठीक अच्छे सो जनरली गोटे सॉफ्ट स्किल स्टूडेंट पाखे कौन कौन हवा दरकार मीन्स not only he or she communicates but also he or she ask questions से हिसाब से क्वेश्चन पचारि पड़ो राइट सो सेंटेंस गुड़ा को मन रखा गले प्रथम मीन्स किसी इनफॉरमेशन गुड़ा को कलेक्ट करी ताकू मीन्स बुझिके मन रखा पड़ो सेकेंड मीन्स यू नीड टू ऑल्सो फॉर्मेशन यू नीड टू ऑल्सो क्रिएट क्वेश्चंस so those questions which will help you you know means ask others and as well as to get the answer of those questions right to get the answer of those questions by yourself right तो एटा होची इंटरोगेटिव रो इंपेरेटिव जनरली इंपेरेटिव रे जेमती मु तुमको कहली जे इंपेरेटिव रे में कोन सजेशन एडवाइस ऑर्डर एवं क्वेश्चन सो you need to create the kind of emotion right so when you are talking about imperative you give a suggestion like go to hospital and treat yourself this is nothing but a suggestion go to hospital and treat yourself so advice like you can say that study today hard you will get the fruit tomorrow right aji pada काली की तुम भल रिजल्ट हम स्टडी हार्ड एंड गेट द गुड फ्रूट टुमोरो सो से भाव ऑर्डर राइट लाइक ब्रिंग मी अ मीन्स पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम सो ब्रिंग मी अ पीस ऑफ पेपर सो सॉफ्ट स्किल रे मीन्स गोटे पिलाटी को छोट छोट
मीन्स पूरा सेंटेंस टा मन रखिबा जदि डिफिकल्ट अटे सो मीन्स सिंपल सेंटेंस बा छोटो छोटो फ्रेज गुड़ा को एवं गोटे गोटे वर्ड को वर्ड फ्रेज एवं सिंपल सेंटेंस को मन रखिया चेष्टा कर राइट एवं ताको डेली वाइज यूज करिया को सिखाओ राइट तेबे जाए कि कौन हम मीन्स योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश will improve as well as you able to make fluent English language right tomar English language of fluency ta asibo कारण because there is a means there is a famous saying गोटे बहुत बड़ा कोट अच्छी जे कौन ना why can't we speak because we have a lack of word power we have a lack of word power so आमो भितर word power टा बहुत कम अच्छी so let's say that if I say how much or how many words you know or how many words one knows right so generally if you see that word जदि आमे देखिबा ताले means गोटे student ता पढ़ा करिए जे somehow called 10,000 words से मन रखि थाए कारण जतिक से इंग्लिश means तार 5th रु नै कि 12th पर्यंत बा ग्रेजुएशन पर्यंत पढ़ी था एवं ताको मन रखि थाए but if you talk about means if he or she tries to enhance or increase his or her word power every day then what will happen now he will not lose he will not he will not helpless to speak a proper sentence or a means appropriate sentence or lack of words forming into a sentence so definitely he will get means a lot of ideas because of the words he acquires बहुत गुड़े words or knowledge जेहेतु अच्छी सो से से कौन ना सेंटेंस गुड़ा को आराम से फॉर्मेशन करि परिबो एवं सेंटेंस को बुझी मते परिबो सो से वर्ड पावर टा को डेवलप करिबा दरकार प्रत्येक दिन 3 ରୁ 4टा सेंटेंसेस मीन्स जो सेंटेंसेस गुड़ा को तमर डे टू डे लाइफ रे यूज करि परिबो से गुड़ा को पढ़ी कि मन रखिया दरकार देन थर्ड इज कॉल्ड एज मीन्स रीडिंग इज समथिंग विच इज हाईली एसेंशियल तुम चेष्टा करे जमी कौन प्रत्येक दिन एटलिस्ट गोटे गोटे पेज पढ़ब एवं सेटा हे पारे न्यूज पेपर बा सेटा हे पारे मीन्स कौन स्टोरी बुक बा कौन नोवेल सो बाय डूइंग दैट यू विल गेट द हेल्प ऑफ व्हाट मीन्स good knowledge in the English language as well as you get the fluency you also get the idea like what to say, where to say and how to say, right, and which way to say. So these are the things. So that's all for the day. So let me point out we have also certain things which we will discuss here. Could he? Yes. Yes. I would like to show you something here. I don't know. Yeah. So you can see that this is our unique digital academy and you could find out we are providing class 6 to 10th math, science, English, SST, all the subjects, right, and not only we provide from class 6 to 10th we also provide means intermediate course 12th standard course आम 12th standard course मध्य दौचु so arts, commerce and science and science जो subject गुड़ा अच्छी physics, chemistry, math and biology so ए सबू गुड़ाक तुम ऑनलाइन क्लास रे पाई परिबो राइट सो एंड ऑफलाइन क्लास रे मध्य पाई परिबो सो ऑनलाइन क्लास रे पाइयो केले तुम स्कैन मीन्स ए क्यूआर कोड टा देखुछ एटा को क्यूआर कोड को आ जाए ए क्यूआर कोड को स्कैन कला परे मात्र टंकाटे प्रत्येक दिन देकी तुम मीन्स ऑनलाइन क्लास गुड़ा को अटेंड करि परिबो
ता व्यतीत जदि जो मैंने भी चाहूँ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने से मैंने 999 रुपीज मात्र देकी तमे चाहिए ऑफलाइन क्लासेस गुड़ाक अटेंड कर मन रख मीन्स ए क्लास गुड़ाक सहित स्पोकन इंग्लिश क्लास फ्री अच्छी. So you can find out all kind of facilities, like we provide all the students with in offline class AC classroom with the study materials. All the study materials are provided to the students. Sabu study material provide kara jibo. So we also provide regular test and reports, and trying to see that what के student development कोठी होची कोठी होनी सेगुड़ा मध्य आमे जणाउछु. सो एवं पिलार टाइम हिसाब रे मध्य क्लासेस ताकु अलर्ट करा जाउची. सो ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटी विथ अ लो कॉस्ट, लो प्राइस दौचु. सो एज वेल एज वी also give the facility of smart class with digital board. So प्रत्येकटी जिनस इजी मीडियम रे पिलाटी बुझी पारिबो. So whether it's a periodic test or and solutions or any kind of a thing. So एवं जो पिलाटी ऑफलाइन क्लास अटेंड करछि से ऑनलाइन लाइव क्लास मध्ये पाई परिबो. सो एंड ताकू रिकॉर्डिंग क्लासेस मध्ये मिल जिवो, राइट. सो जदि पिलाटी बाहरु एठी आसुछि ताले ताको हॉस्टल फैसिलिटीज मध्ये आम अवेलेबल करै दउछु. ठीक अछि. सो जे भी चाहूच एडमिशन करिबा पई बा जो माने भी चाहूच कांटेक्ट करिया पई से माने ए नंबर रे मींस कांटेक्ट करि परिबे. ठीक अछि. सो दैट्स व्हाट you can also go for this another thing which is called as for those of the students who want to join online and offline classes of this they can also go for the PGDCA stenography, tally and spoken English classes, right. It's a combo pack. So somebody who goes for all these things, जने जदि PGDC जाऊ नौची स्टेनोग्राफी, टैली एंड स्पोकन इंग्लिश नौची, सो सब गुड़ाक ताको मात्र 3999 टଙ୍କା दवा पड़ो. ठीक अच्छे. सो यू शाल नॉट गेट कन्फ्यूज. सो एटा अलगा अटे एवं एटा अलगा अटे, किंतु एटा होची सही पिला मानक पई जो माने प्रोफेशनल अटंती, जो माने मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर माने जोटा कि निहाती दरकार. गवर्नमेंट सर्विस जने जते कोची ताकू कंप्यूटर नॉलेज दरकार, शॉर्ट हैंड नॉलेज दरकार, टैली अकाउंटिंग विषय जानी थिबा दरकार, एज वेल एज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो ए सब जिनस पई मात्र 3999 टଙ୍କା जनकु दबाउ पड़िबो. ठीक अछि. सो एवं तुम मैंने रेगुलरली सब स्किल क्लास अटेंड कर परिबो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय.